Assalamu alaikum, Aziz Ahmed here again on the evening of 16th of November 2025. आज ज़रा मुख्तलिफ टॉपिक पे बात करते हैं of what the Epstein file says about Imran Khan and Donald Trump and all the others, and compare it, not compare it, just think about what bakwas they put up in the Economist gossip tabloid 1843 to besmirch, और या आप ये कह सकते हैं कि बुशरा बीबी को के और इमरान खान के ताल्लुकात के बारे में बकवास शाया किया, just for political reasons. The reason being, when the so-called Field Marshal, now the Chief of Defense Services of Pakistan forever, without any with all immunity for life and thereafter, was sacked by Imran Khan as DGISI, and he wanted Bushra Bibi to intervene to on his behalf and have Imran Khan overturned that decision. और इमरान ने उस वक्त नहीं, I'm sorry, बुशरा बीबी ने उस वक्त ये कहकर उस बात को टाल दी कि अफेयर्स ऑफ द स्टेट से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है. सो उसके बाद वो बुशरा बीबी के वो ख़िलाफ़ हो गए, और अब तक इद्दत की वो क्या कहते हैं केस से लेकर अब तक ये सारे काम चल रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो एप्स्टीन फाइल की वीडियो है, which I am going to attach, is must be credited to the American Broadcasting TV network CBS, because for copyright reasons CBS ने ये रिपोर्ट रन की थी. What was the relationship between President Trump and Jeffrey Epstein, the financier and convicted sex offender? What did the president know about what Epstein was up to? And was Mr. Trump involved in any way? Those are just some of the questions being asked as journalists read through thousands of pages of Epstein documents released yesterday by the House Oversight Committee. The president has repeatedly denied any wrongdoing and calls it all a hoax perpetrated by Democrats. Now, in Epstein's emails and texts, we are getting his side of the story. Here to tell both sides of the story is Justice Correspondent Scott McFarland. Scott? Hey, John, amid this tonnage of messages and records, Jeffrey Epstein is critical of the president and says he knew about the girls, turning a long simmering controversy to boil. President Trump's name appears hundreds of times in the newly released batch of 23,000 pages of records and messages from convicted sex offender Jeffrey Epstein. Something the president declined to answer questions about again today. The emails and texts involving Trump include Epstein saying that he'd met some very bad people, none as bad as Trump, and that Trump once left his nose print on the glass as young women were swimming in the pool, and he was so focused he walked straight into the door. And another in which Epstein said Trump knew of it and came to my house many times during that period, but never got a massage. Late last night, Trump called the Epstein scandal a hoax, and he has long denied knowing of Epstein's crimes. I had no idea. I haven't spoken to him in many, many years. In a 2010 deposition, Epstein was asked about his experiences with Trump. Have you ever socialized with Donald Trump in the presence of females under the age of 18? Though I'd like to answer that question, at least today, I'm going to have to assert my 5th, 6th, and 14th Amendment rights, sir. One of the recipients of Epstein's emails, author Michael Wolff, told a podcast Wednesday Trump and Epstein were close. Donald Trump and Jeffrey Epstein had this deep relationship. They knew everything about each other. Their obsession was women, girls, models. Today, the White House dismissed Wolff's claims, saying he's been proven to be a fraud.
Epstein survivor Annie Farmer, who alleges Epstein and Ghislaine Maxwell abused her when she was 16, tells CBS News the newly obtained messages show why the Trump administration should make all the Epstein case files public. We're just asking for the full files to be released, so we don't have to continue to live, in this roller coaster world where you never know what's coming one day to the next. A handful of Republicans, including Colorado's Lauren Boebert, are supporting a bill that would require the release of those files. Wednesday, the Attorney General and FBI Director personally lobbied Boebert to change her mind. But the U.S. House Speaker says they will proceed on this vote, which could release the Epstein files and proceed with the vote next week. Despite the nudging and the arm twisting, there still seem to be the necessary 218 votes to pass it in the House and put pressure on the Senate to do the same. Okay, Scott McFarlane in D.C., thank you. Breaking news, leaked emails from Epstein indicate why ex-Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, might be rotting in a prison cell in Pakistan right now. So these leaked emails show that Jeffrey Epstein and whoever he was communicating with believed that Imran Khan was a greater threat than Erdogan. That's the current Prime Minister of Turkey. Khomeini, that's Iran. Okay, I'm not even going to try and butcher that. Jinping. And even Putin. Imran Khan was seen as more dangerous than Putin. He called him an Islamist, a dangerous Islamist, a wacko. And we all know that the current government in Pakistan is so corrupt. Shahbaz Sharif is a leech. He's a grifter. I literally showed you guys a video on my other account the other day of the tourism advisor for Pakistan at a tourism fair in London, shaking hands with the Israeli rep saying, oh, we're open to doing business, like we're not like others. No, you're not. You're sellouts, you're normalizers, you're collaborators. So when I've been trying to tell you that it's all political, that they put Imran Khan in jail because he is anti-American, anti-imperialism, anti-Zionist, they know that the Pakistani government is corrupt. They know that they can pay them off. So we turn a blind eye to what is happening in Gaza. You know, if Imran Khan was in power, that would not be happening. And they also know we have the capability to do a lot of damage. Go look it up. Look at the capabilities of Pakistan and understand why it's better for these guys to have them in their pockets than have a hero like Imran Khan loose on the streets to fight them. Oh my God. Watch this space. These people, they need exposing, because believe me when I tell you that all of our struggles are connected, these people are behind everything. To make this video a little bit more comprehensive and have more topics on it, I'll have the report on the HamoodurRahman Commission and the video also on it of how Bangladesh was created with because of the army going after the Bengalis and Sheikh HamoodurRahman and his mandate, just like today the mandate is with somebody the army doesn't like, and in 1970 they didn't like the mandate given to Sheikh HamoodurRahman, which resulted in the division of Pakistan. मुक्तदरा ने हमेशा शेख मुजीबुर-रहमान को गद्दार बनाकर पेश किया, लेकिन मुल्क तोड़ने के असल जिम्मेदार फौजी हुक्मरान जनरल याहिया और उसके हवारियों के मकरू किरदार का कभी जिक्र तक नहीं किया। आइए जायजा लेते हैं कि जनरल याहिया और शेख मुजीबुर-रहमान में से असल गद्दार कौन था। शेख मुजीब मशरकी पाकिस्तान का अक्सरियती मुंतखब नुमाइंदा था। जनरल याहिया पाकिस्तानियों के हकूक का गासिब था। शेख मुजीब पाकिस्तान ही में रहने का ख्वाहिशमंद था। जनरल याहिया मशरकी पाकिस्तान को बचाने की कोई नीयत न थी। शेख मुजीब जमहूरी असूलों के ऐन मुताबिक अक्सरियती जमात को इक्तदार की मुंतकली का मुतालबा किया। जनरल याहिया
अपनी कुर्सी बचाने के लिए इक्तदार की मुंतकली का कोई इरादा न था। शेख मुजीब बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल याहिया अपने ही हमवतन बंगाली भाइयों पर बदतरीन क्रैकडाउन और खूनरेजी की। शेख मुजीब सिविलियन होते हुए मिलिट्री कोर्ट से सजा दिलवाई गई। जनरल याहिया उस वक्त की दीगर अस्करी क़यादत के साथ मिलकर मशरकी पाकिस्तान लूटता रहा। हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट में पाकिस्तान के दो लख्त होने का जिम्मेदार इखलाकी दिवालियापन का शिकार करप्ट और बुज़दिल जर्नैलों को करार दिया गया है। रिपोर्ट में बदनामे जमाना ऑपरेशन सर्चलाइट का जिक्र है, जिसके मुताबिक उस वक्त की अस्करी क़यादत ने मशरकी पाकिस्तान में आतिशज़नी, दानिश्वर और पेशेवर अफराद का कत्लेआम, बगावत को रोकने का बहाना बनाकर ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के अफसरान का कत्लेआम, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट का कत्लेआम और हिंदू अक़लियतों का कत्ल किया। बहुत बड़ी तादाद में उस वक्त के अफसरान और जवानों ने बंगाली औरतों का रेप किया और सबको इज्तमाई कब्रों में दफन किया। ये सिलसिला ऑपरेशन के आगाज से जंग के इख्तिताम तक जारी रहा। जो अस्करी क़यादत अपनी आवाम ही से लड़ने में मसरूफ थी, वो दुश्मन का क्या मुकाबला करती। महज 2 हफ्ते में जनरल नियाजी ने भारतीय जनरल के सामने हथियार डालते हुए शिकस्त की जिल्लत आमेज दस्तावेज पर दस्तखत किए, जो आज तक पाकिस्तान पे सयाद धब्बा है। कमीशन रिपोर्ट में पाक फौज की सीनियर क़यादत की बुज़दिली, उनकी नाकिस हिकमत अमली और गलत फैसलों की वजह से सकूत ढाका के जिम्मेदारान के कोर्ट मार्शल का भी मुतालबा किया गया, जबकि मुक़तदरा ने हमेशा शेख मुजीब को गद्दार साबित करने की कोशिश की। आखिर उसका कसूर क्या था? क्या पाकिस्तान के अवाम ने उसे सबसे ज्यादा नशिस्तों पर कामयाब नहीं करवाया था? और क्या जमहूरी असूल के मुताबिक इक्तदार अवामी लीग को मुंतकिल नहीं किया जाना चाहिए था? अगर इन बातों का जवाब हाँ में है, तो फिर हमें खुद से पूछना चाहिए कि जिस शेख मुजीब को मुगालता पाकिस्तान में गद्दार साबित किया गया, क्या वाकई वो इस लक़ब का हकदार था या असल गद्दार जनरल याहिया था? आज भी खुद को रियासत समझने वाले जंगल के बादशाह ने अवाम की अक्सरियती जमात के मैंडेट पर डाका डालकर मुस्तरद शुदा अक़लियत को मुल्क पर मुसल्लत कर रखा है। आज पाकिस्तान में सकूत ढाका की तारीख दोबारा दोहराई जा रही है, जो कि 1971 के मुल्क तोड़ने के जहन की अक्कास है। Of course, the third topic I'll be covering will be the 27th constitutional amendment and the resignation of the judges, the latest being Justice Shams Mahmood Zafar from the Lahore High Court, and in the next couple of days, Justice Ishaq from Islamabad High Court is also about to resign, followed by Mohsen Akhtar Kiani and Sanam Imtiaz. So we are in for some sort of a judicial crisis, which has emanated from the donkeys being ushered into the Supreme Court, led by Justice Aminuddin Khan. But having said that, all the bar associations, Lahore High Court Bar Association and the Karachi Bar Association, the two largest bar associations, are priming up for a lawyers' movement. And Justice Mansoor Ali Shah from Islamabad High Court has agreed to address the Karachi Bar Association to kick off the movement in this regard. जो इंटरेस्ट एक है, इन्होंने एक हो जाना है, अजरदारी और नवाज शरीफ ने इकट्ठे हो जाना है, क्योंकि इनके इंटरेस्ट एक है। क्योंकि ये जो मैं जो ये लेके आ रहा हूँ ना, नहीं होंगे, मैं जो हम कानून लाना चाहते हैं ना, ये दोनों नहीं वो बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, ये दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, ये मैं कह रही हूँ, आपका ख्याल है इकट्ठे होंगे? अंदर से हो जाएंगे, ऊपर से शायद नूरा कुश्ती खेलते हैं। मेरी क्या कीमत लगा सकती है ऐसा है? मुझे बताएं, मुझे कौन खरीद सकता है?
को उनके अमाल के सबब पकड़ने लगता तो रूए जमीन पर एक भी चलने फिरने वाले को न छोड़ता, लेकिन वो उनको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत दिए जाता है। सो जब उनका वक्त आ जाएगा तो उनके अमाल का बदला देगा, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है।